everyone, and I'm back with another video on how to choose your dream college in Delhi University BA Honors Economics. Now, अब ये क्वेश्चन है कि आपका कट ऑफ से आपको केएमसी इन द नॉर्थ कैंपस एंड वेंकी इन द साउथ कैंपस दोनों में एडमिशन मिल रहा है. तो क्या करें हम, किस में एडमिशन लें? लेट्स टॉक अबाउट दैट. Now we have taken a very you know uh, a very good approach in discussing कौन सा कॉलेज चूज करें बिकॉज हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं टू कंपेयर केएमसी एंड वेंकी इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या किस कॉलेज को हमें चूज करना चाहिए, आपके लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाए, इसके लिए ये वीडियो बना है. सो प्लीज वॉच टिल द एंड. What are the differences in doing BA Honors Economics from KMC and Venki? Let's get into it. सबसे पहले KMC North Campus पे, right? It's part of the whole Delhi University North Campus charm. Venki South Campus पे है. Number of seats KMC में 78 है and Venki में 49 है. So KMC has more seats than Venki. Fees for a general student is 15,505 a year for KMC, which is typically for all DU North Campus colleges. Venki, it is coming out to about 19,875 a year. So the fees पे 4-5 हज़ार रुपए per year का difference है. So that's not a big difference. That should not be a factor जिसमें हम सोचे कि हमें KMC जाना है या Venki जाना है. NIRF ranking में 9th है KMC and 13th है Venki. To give you perspective, I think टॉप पे है मिरांडा कॉलेज इन NIRF रैंकिंग. सो ये रैंकिंग्स एक जनरल रैंकिंग्स है ऑन सर्टन पैरामीटर्स जिसमें KMC 9th पे आ रहा है एंड 13th पे आ रहा है वेंकी. एंड दीज रैंकिंग्स माइंड यू चेंज एवरी ईयर. ओके, दीज आर द करंट रैंकिंग्स ऑफ KMC एंड वेंकी. सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो है कि आफ्टर डूइंग अ प्रोग्राम आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है. व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस that you can expect to get after doing your bachelor's in economics from KMC or Venki. KMC ka highest reported package is 23.05 lakhs per annum. Average is 7.24 lakhs per annum. Venki, on the other hand, reported a highest package of 21.5 lakhs per annum and an average of 5.53 lakhs per annum. ये 2024 के फिगर्स है जो हमारे पास लेटेस्ट मिले हैं. द सोर्स ऑफ दिस इज देयर प्लेसमेंट ब्रोशर्स, देयर कॉलेज वेबसाइट्स, देयर लिंक्डइन पेजेस. नाउ इफ यू सी सिमिलर है दोनों के, बट थोड़ा एज केएमसी का है, स्लाइट एज. नाउ ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीन कि आप केएमसी में चले गए तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा. You have to work hard and you have to be amongst the best to get such a high package out of KMC college or out of Venki college. So दोनों colleges में ही आपको opportunities मिलेंगी to get good placements. Hostels दोनों में available है, KMC में भी और Venki में भी. CUET cutoffs, like we have discussed in one of our previous videos, CUET cutoffs दोनों की बहुत ही similar है. 74.6 is the reported CUET cutoff for both. Now, if you see on the face of it, दोनों बिल्कुल same लगते हैं. So कैसे differentiate करें? So we have done something special and extra. We are comparing the societies of both the colleges. Why societies? Because societies will determine what is the quality of your engagement in that college. क्या opportunities है? Now, the regular dance, drama, or debating, or the economic society, or any other society, ये सब में होती है. So we have not put that down. What we have put down are special societies, 180-degree consulting, but it comes to both KMC and SVC. What is special about KMC that is not there in Sri Venkateshwara College is Kartavya, a civil services society in KMC. This society has students who's focused on cracking the civil services exam. So, yes, everyone, a special society of students who want to only prepare for the civil services exam.
That is there in KMC, which is not there in most colleges, including Venki. सो इफ सिविल सर्विसेज का एम है आपका, और आप शायद आप सोच रहे हो कि हम सिविल सर्विसेज में हम करें, तो ये वाला कॉलेज KMC आपका प्रायोरिटी हो सकता है, बिकॉज KMC हैज समथिंग दैट अदर्स डोंट. कर्तव्य, द सिविल सर्विसेज सोसाइटी. SPIC McKay is also a multicultural organization which is present in KMC. It is present in Hansraj, but may not have been present in Venki. All right, so ये एक differentiating factor आपके लिए हो सकता है. Special feature, what is the special feature about KMC? The special feature about KMC, अगर हम स्टूडेंट से बात करें या वहाँ के लोगों से बात करें, so they said that Bain Capability Network, a highly reputed organization, regularly comes on campus in KMC. So it's a great opportunity for students to enter into such an organization if they are KMC students. And there's also a gym on campus which is very popular with students. So that is a special feature जो नहीं मिलता है in other campuses. So this is something that KMC is specially offering. So what's so special about Venki? Generally, students says that the faculty is very enthusiastic, and they also hold small sessions, it's smaller batches to help the students academically. So the teachers are very helpful and supportive and want the students to exceed at Venki. ये दोनों ही फीचर्स बहुत ही यूनिक है अबाउट KMC एंड वेंकी, एंड यू मस्ट चूज योर चॉइस ऑफ कॉलेज very carefully based on all the factors that we have discussed. I thank you for your time, and we will be back with more such engaging and informative videos soon. So follow EduSure for all information on Delhi University Economics Honors course and how to choose the best college, best program in DU. Thank you.